Good morning, children. Today we will take the topic trigonometric ratios of specific angles. Previously we had seen how we could find out the trigonometric ratios with respect to a particular angle. Now today we will specify the measurement of that angle and we will find the trigonometric ratios for 45-degree angle and the trigonometric ratios for 30-degree and 60-degree. तो कैसे find करेंगे? We will just see. Okay. So take a right angled triangle. ठीक है? Right angled triangle. Let it be A, B, C. Now when I say angle A is 45, if I take angle A is 45, it is an acute angle? Yes. If angle A is 45, B is 90-degree. Then can you say that angle C is also 45? Yes, no. So angle C will also be 45 because the sum of the two angles A and C should come out to be 90. So if A is 45, then C will also be 45, isn't it? So this is how your representation of the triangle will be when you are taking any one of the angle, or the angle which you are specifying is 45-degree. ठीक है? So you will get it this way. ठीक है? Now can you say that these two angles are equal? That means the sides opposite to them, that is BC and AB, they will also be equal. Okay. So you can write here, in right angled triangle ABC, angle A is equal to angle C is equal to 45 degrees. Therefore AB is equal to BC. AB is equal to BC लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि angles opposite to congruent, the sides opposite to congruent angles will also be equal. Okay, reason लिख सकते हो, because sides opposite to equal angles are equal. Okay, it's a property of the triangle. So let us take, let AB is equal to BC is equal to A ले लेते हैं हम. ठीक है? Any positive integer A. That means I have BC as A and AB also as A. Then can we find AC? We can find, isn't it? So using Pythagoras theorem, what do I have? AC square will be equal to AB square plus BC square. ऐसा होगा ना? So AC square will be equal to AB square plus BC square. Okay. Therefore AC is equal to under root of, what is your AB square? It is A square plus A square, that is equal to root 2 A square. Okay. That is equal to root 2 A, है ना? A square plus A square 2A square हो जाएगा, अंडर रूट 2A. ठीक है? सो यू गेट योर AC एज रूट 2A. सो उसको तुम लिख लो यहाँ पे. Followed or not? Okay. So you have got the three sides of the triangle. Now let me take sine A, that is equal to, say, sine 45 degree will be equal to what? Opposite, that is, okay, I'll write first opposite upon hypotenuse. ऑपोजिट क्या है? BC और हाइपोटेनस क्या है? AC. ठीक है? सो दैट विल बी व्हाट? A बाय रूट 2A. तो कैंसिल आउट हो जाता है, इट इज 1 बाय रूट 2. ठीक है? cos A क्या होगा? cos A, इट विल बी इक्वल टू अगेन cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, इट विल बी adjacent upon hypotenuse. So what is adjacent to A side? It is AB by AC, which is equal to A by root 2A. Cancel. So it becomes 1 by root 2. Clear or not? Okay. What will be tan A? Tan A, that is tan, हमारा A एंगल हमने 45 लिया है, इसलिए 45 डिग्री रखेंगे. It will be opposite upon adjacent. Okay, opposite is BC, adjacent is AB, that will be equal to
opposite upon adjacent, it will be a by a which is equal to 1. तो हमें sin cos tan तीनों मिल गया. तो can we find cosec, sec and cot because they are inverses. So cosec A will be or cosec 45 degree, it will be inverse of sin A. That means inverse of 1 by root 2, that is root 2. Cosec 45 will be root 2. Sec 45 degrees will again be root 2 क्योंकि cos 45 is 1 by root 2, उसका inverse क्या हो जाता है root 2 होगा. और cot 45 that will also be 1, cot 45 will be 1. तो हम सारे trigonometric ratios for angle 45 we have obtained. Clear no? So ये बात याद रखना है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हम ये वैल्यूज यूज करने वाले हैं. सो व्हेनेवर वी से sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45 सबका वैल्यूज तुम्हें याद होना चाहिए. sin 45 will be 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, tan 45 1. ठीक है, बिकॉज a by a आ जाता है, cot भी a by a ही आएगा. सो दैट इज ऑल्सो cot 45 will also be 1, sec 45 will be root 2 and cosec 45 will be root 2. I hope it is clear. So this is how you can find trigonometric ratios of angle 45. Now coming to trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. अब इसमें हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल न लेके, क्योंकि हमें 30 और 60 दोनों का चाहिए ना, तो हम दोनों का फाइंड कर लेते हैं एक ही ट्राइंगल में से. ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल में आई एम ड्रॉइंग अ ऑल्टीट्यूड. ओके, लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी. इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब सारे ही एंगल 60 होंगे, तो यहाँ पे 60 डिग्री. साइड्स भी इक्वल होंगे, दैट इज ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. ऑल्सो दे विल बी इक्वल टू बी सी, बट वी विल नॉट टेक दैट. और यहाँ पे ए डी इज द ऑल्टीट्यूड. तो मैंने क्या किया है, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल. ठीक है, पहले ये ले लेते हैं, इट इज इक्विलैटरल. ओके, therefore we can write what, angle A equal to angle B equal to angle C is equal to 60 degrees. We have supposed or assumed let triangle ABC is equilateral triangle. तो मतलब this is obtained. Also what we have, AB is equal to BC is equal to AC. ये भी हो सकता है ना, equilateral triangle है. Okay. All and right, AD is perpendicular to BC. AD is the perpendicular which we draw on BC. That means ये दोनों एंगल, that is ADB and ADC, ये दोनों it will be right angles, 90 degree होगा. Okay, so this will be 90 degree in each case. ठीक है. Now our aim 60 तो है हमारे पास, ये 90 है, मतलब ये 30 ही होगा, because ADB is a right angled triangle. Okay, also we can prove that BAD and CAD both are 30 degrees. Follow. So in triangle ADB and triangle ADC we have AB equal to AC because it is equilateral triangle. Okay, then what do we have, angle B is equal to angle C. Okay, then we have AD is equal to AD. AD is equal to AD. Okay, also same side है ना, दोनों ट्राइंगल का सेम साइड हुआ AD. Also we have angle ADB equal to angle ADC which is equal to 90 degree because we have drawn a perpendicular. Okay, तो ये जो रिलेशंस है with RHS theorem, that is right angle hypotenuse side.
using RHS, okay, or by RHS, we have angle ADB congruent or triangle ADB is congruent to triangle ADC. If ADB is congruent to triangle ADC, then we can write angle BAD will be equal to angle CAD, and both will be equal to both are equal. One more step you can write, but angle BAC is equal to 60. So we can have therefore angle BAD equal to angle CAD equal to 30 degrees. Okay. So I get my angle BAD as 30 degree, also angle CAD as 30 degree. ठीक है. Now considering right angle triangle ABD, okay, because triangle ABD, it is right angled triangle, ठीक है, जहाँ पे angle B is 60, angle BAD is 90 and angle ADB is 90 and BAD is 30, ठीक है. So also here you will get what, BAD equal to CAD 30 तो मिल गया. Also we can say also BD is equal to DC, BD is equal to DC भी होगा ना, ये भी तो है, BD will be equal to DC, ठीक है. Now before writing this, what will I write? Let AB is equal to 2A. Let me take it as 2A. Side AB is equal to 2A. BC will be also 2A. Therefore, BC will also be 2A. Okay. Now, BD is equal to DC. We have proved here BD is equal to DC because they are the sides of the two congruent triangles. So, BD is equal to DC, we have proved. So, therefore, I can write what BD is equal to DC, and BD is equal to DC means it will be BD will be half of BC, okay, BD will be half of BC, that is equal to half of 2A, which is equal to A. Got it or not? Okay, it will be A. So I have taken my BC as 2A and I got BD as A. Barabar? I have taken my AB as 2A. Can I find a triangle? Can I find a side AD in triangle ADB? Okay. So now I can write in triangle ADB. Okay. I have taken triangle ADB. ठीक है. ADB triangle में AB I am having 2A. I have BD as A. Therefore, what will be my AD? Using the Pythagoras theorem, I have AD square is equal to AB square minus BD square minus BD square. AB square minus BD square. Now, AB is what? It is 2A. 2A the whole square minus A the whole square. That becomes 4A square minus A square. So, I have AD is equal to 3A, AD square is equal to 3A square and AD will be equal to root 3A. Square root ले लो यहाँ पे. Okay. So, I have in triangle ADB I am talking, it is a right angled triangle. We have angle B 60, we have angle BAD as 30, we have AB as 2A, BD as A, and now I have got my AD as root 3A. तो अगर हम सिर्फ अपना राइट एंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट करें तो कैसे मिलता है, देखो ऐसे, इट इज ADB, ठीक है. BD हमारा A है, AB 2 है और AD क्या है, रूट 3A है, रूट 3A, ठीक है. तो तीन साइड हमारे पास है,
दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों के लिए हम रेशियोस निकाल सकते हैं, रूट 60 के फॉर 60 डिग्री एंगल ऑल्सो एंड 30 डिग्री। पहले हम 30 डिग्री एंगल का ले लें। ओके, 30 डिग्री एंगल इज एंगल ए हियर इन दिस केस, ऐसे ट्राइंगल में। ठीक है, सो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो आई हैव ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है हमारा, a है, और हाइपोटेनस क्या है, इट इज 2a। ओके, सो आई राइट 2a, a कैंसल्स आउट, इट इज 1/2। सो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। वैसे ही cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट क्या हो जा रहा है, एडजेसेंट टू एंगल ए इज √3 AD, दैट इज √3a, √3a बाय हाइपोटेनस दैट इज 2/a, तो कैंसिल आउट, इट इज √3/2। फॉलोड और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट क्या हम फाइंड करेंगे, tan 30। ओके, tan 30, tan 30 will be opposite upon adjacent. Opposite to A is A and adjacent is √3a। तो ये दो कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, 1/√3। यस और नो? तो इस तरह से हमें साइन कॉस टैन मिल गया। तो कॉट सेक और वो फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग, कॉट सेक एंड कोसेक। ओके, साइन 30 1/2 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक विल बी 2, कॉसेक 30 विल बी 2, कॉस 30 इज √3/2, मतलब सेक 30 विल बी 2/√3। ओके, tan 30 इज 1/√3, मतलब कॉट 30 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ओके, सो दैट यू कैन राइट डाउन, आई एम राइटिंग इट हियर। ओके, cosec 30 will be equal to cosec 30, it is inverse of sine, that will be 2/1 which is equal to 2। sec 30 क्या हो जाता है, it is inverse of cos, so sec 30 will be 2/√3। okay, and cot 30 will be equal to, cot 30 it will be equal to inverse of tan है, tan 30 is 1/√3, मतलब it will become √3। so these are the different trigonometric ratios for angle 30। ठीक है, पहले ये 45 वाला कॉपी कर लो, I will be rubbing out this। okay, okay, now for 60 degree angle I'll draw the same triangle here so that it remains, the values remain the same only। this is your A D B and now we will be talking about 60 degree, here it was 30 degree। ठीक है, तो 60 डिग्री और हर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हमें फाइंड करना है। हमको AD मिला था √3a और ये मिल गया है 2a, AB we have assumed it is 2a because of which BD will become a and AD is √3a, just we have obtained that। ठीक है, अब cos 60 degrees it will be what, cos 60 मतलब adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse। cos 60 वही होता है ना, cos 60 adjacent, adjacent to 60 is BD, that means it is BD by hypotenuse is AB, that is A/2a which is equal to 1/2। हमने cos 60 फाइंड कर लिया, अभी sin 60 फाइंड करते हैं। sin 60 इट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। 60 डिग्री का ऑपोजिट इज AD और हाइपोटेनस इज AB, सो AD इज √3a और AB इज 2a, a कैंसिल आउट, सो इट इज √3/2। गॉट इट? ठीक है, नाउ tan 60 डिग्री it will be equal to what, opposite upon adjacent, opposite upon adjacent।
ठीक है, दैट विल बी व्हाट इज ऑपोजिट साइड टू 60 डिग्री, इट इज AD. सो AD बाय BD. AD हमारे पास √3a है और BD हमारे पास a है, कैंसिल आउट, इट बिकम्स √3. ठीक है, अब ये 3 हमें मिल गया है तो हम उसका इन्वर्सेस भी फाइंड कर लेते हैं. सो व्हाट विल बी sec 60? Sec 60 विल बी हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, या इन्वर्स ऑफ कॉस ले सकते हैं. इन्वर्स ऑफ कॉस इज 2/1 विच इज इक्वल टू 2. cosec 60 डिग्री विल बी हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट. इन्वर्स ऑफ साइन ले लेते हैं. इन्वर्स ऑफ साइन इज 2/√3 और cot 60 डिग्रीज ले लेते हैं, दैट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. 60 का एडजेसेंट क्या है? A है और ऑपोजिट क्या है? √3a है. ओके, a कैंसिल आउट, सो इट इज 1/√3. So cot 60 you got 1/√3. So this is how various trigonometric ratios of the different 60 degree angle and 60 degree angle and 30 degree angle can be found. अब तुम्हें एक टेबल बनाना है. In your book the table is given to you and the values you have to learn it by heart. Any one you learn. 45 का तो तुम्हें लर्न हो जाएगा. अगर 30 का लर्न कर लेते हो तो 60 का तुम उसका यू कैन कंपेयर. सी साइन 30 इज 1/2 तो cos 60 1/2 है. ओके, साइन cos 30 इज √3/2 देन साइन 60 इज √3/2. उसका उल्टा एनी वन यू रिमेंबर, आइदर 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल. द 60 डिग्री एंगल का ऑपोजिट होगा द 30 डिग्री एंगल का trigonometric ratios. Okay, so if sin 30 is 1/2 then cos 60 will be 1/2. Cos 30 is √3/2 मतलब cos 60 will be √3 sin 60 will be √3/2. Okay, so that way it you have to, or you can remember, you can learn it because there may be confusions created, so you can learn these values by heart. You have to learn it because that you are going to use in your next problems. Okay, now let us observe trigonometric ratios of 0 degrees. 0 degree. Okay, let us consider angle A. हम एंगल A को लेके we will consider this situation. We will try to make the angle A 0. मतलब हम एंगल A को डिक्रीज करते जाएंगे. ये तुम्हारा AB है. अब हमने हमारा एंगल A का साइज डिक्रीज किया. ओके, तो ये तुम्हारा A B C. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इधर A इतना है, यहाँ पे A इट हैज़ डिक्रीज. अब वो डिक्रीज हुआ तो BC का लेंथ भी डिक्रीज होगा. ओके, अगेन मोर वी विल डिक्रीज A B, और भी हम कम कर देते एंगल A का वैल्यू. हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट एंगल A टू बिकम 0. ठीक है, तो अगेन ये BC और भी डिक्रीज हो गया. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब A B एंगल A इज वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू, या ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 0. मतलब B भी यहीं पर है और C भी यहीं पर है. और एंगल इधर क्या होता है? एंगल A इज close to 0. Angle A is close to 0. Also BC will become or will be almost 0. BC almost 0 हो गया. ठीक है, अब in this case if I want to write sin A which is sin 0, मतलब A it has become close to 0 and BC will almost be equal to 0. तो अगर हम sin 0 का लेना चाहें that will be equal to what? Sin 0, that is BC by AC. Okay, so BC by AC, but BC is almost equal to 0.
तो AC it will be 0 by AC. Therefore what do we find here? Sin 0 is equal to 0 degree is equal to 0. ठीक है, अब इसी का cos A लेना चाहें हम, that is cos 0 degrees, cos 0 degrees. तो cos 0 degree will be what? Adjacent. It is adjacent upon hypotenuse. Now what is the adjacent to A? It is AB. ठीक है, it will be equal to AB upon hypotenuse is AC. But AB और AC जो है वो equal नहीं हो जा rहा है. As A is becoming 0, AB will be same as AC. दोनों ही same हो जाता है. So in that case AB by AC can be written as AC by AC, which is equal to 1. So what do I have? Cos 0 degree it will be equal to 1. तो हमें sin 0 cos 0 दोनों मिल गया. ठीक है, अब tan देख लेते हैं. What is tan 0 degree? Tan 0 degree, ठीक है, tan 0 is, अगर हम उसका रेशियो लिखे that is sin 0 degree upon cos 0 degree, यही होता है ना उसका रेशियो. So sin 0 degree will be sin 0 हमें मिला 0 है और cos 0 1 है. So I have tan 0 degrees is equal to 0. Okay, so that will be equal to 0. See, ये जो tan है ना वो sin upon cos कैसे आता है ये देख लो एक बार. tan थीटा जो है that is opposite upon adjacent, ऐसा होता है ना. ठीक है, अब दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम डिवाइड कर लेते हैं हाइपोटेनस से, तो दैट बिकम्स व्हाट? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ओके, अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट डिड आई डू? ऑपोजिट को भी मैंने हाइपोटेनस से डिवाइड कर लिया और एडजेसेंट को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर लिया. नाउ व्हाट इज दिस इज व्हाट वी हैव रिटन योर tan एज tan थीटा. What is opposite upon hypotenuse? Is this sin theta? Okay. What is adjacent upon hypotenuse? वो cos theta होता है. So therefore I can write my tan theta is equal to sin theta upon cos theta. तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है. Okay. इसी तरह से we will get cot theta as cos theta upon sin theta. ये भी अंडरस्टैंड कर लेना. We will get cos theta upon sin theta. ठीक है, तो ये हमें मिल गया. नाउ 3 रेशियोज हमें मिल गए. नाउ cot 0 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट? इट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब cos थीटा क्या है? cos थीटा विच इज cos 0 डिग्रीज. वी आर टॉकिंग अबाउट 0 डिग्री एंगल. सो इट इज, instead of writing theta I should write it as 0 degree because we are talking about 0 degrees. So cos 0 degrees का वैल्यू 1 है और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 है. तो 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब वो इन्फिनिटी हो जाता है. दैट इज इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड which is the other ratios remaining? Sec 0 degrees, that is inverse of cos 0 degree. cos 0 degree हमारे पास 1 है, तो 1 divided by 1 which is equal to 1. ठीक है. So I get sec 0 degrees is equal to 1. Now let me see cosec 0 degree, that is inverse of sin 0 degree. Sin 0 is 0, that means it is 1 by 0. Again it will be not defined. It will be not defined. So cosec 0 degree, it will be not defined. Followed everyone? So this is how you can understand for 0 degree, trigonometric ratios for 0 degree. Okay. Next we will see trigonometric ratios for 90 degree. Okay, copy down. Let us study about trigonometric ratios of angle which is 90 degree. ठीक है, तो वही सेम ट्राइंगल हम ले लेते हैं पहले. ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C. ठीक है,
Now when you want to make your angle 90 degree, what do you do? ये अभी suppose ये 30 degree है, तो इसको इस तरफ if you just increase the angle A, increase the measurement of angle A, वो किस तरह कर सकते हैं? जब increase करते हैं ना तो naturally ये जो part है ना, you bring this A point here, so naturally this part will increase, that means angle A will increase. Okay, so now you have your angle A this way. ठीक है, earlier कैसे था? Earlier इस तरह था. So what have we done? We have done increased the angle A. ठीक है, next हम क्या करते हैं? We bring that A और इतना ज़्यादा हम इंक्रीज कर देते हैं कि A becomes almost 90 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट इतना ही हो जा रहा है. सो दिस इज योर B एंड दिस इज योर C. तो ये तुम्हारा B भी हो गया और ये तुम्हारा A भी हो गया और ये C हो गया. सो एट दिस पोजिशन व्हाट इज हैपनिंग? एंगल A इज बिकमिंग 90 डिग्री. हो गया ना, ये A को हम इस तरफ लेके आ गए तो सीधा खड़ा हो गया. तो A विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 90 या वेरी क्लोज टू 90 हम बोल सकते हैं. जब A वेरी क्लोज टू 90 है तो ये जो AB है that is almost 0. AB is almost 0. It is almost 0, no? Now we can write the ratios for the angle 90. First we will write sine 90. ठीक है, sine 90, what does it show? Sine 90 is actually opposite upon hypotenuse. Now sin 90 opposite of angle A. A हमने 90 बना दिया है ना, वहाँ पे देखो A 90 बना दिया है, तो sin of angle A we are talking about. Opposite कौन सा है? BC है. So that is BC by hypotenuse तुम्हारा क्या है? AC. AC. Followed or not? Sin becomes opposite upon hypotenuse which is BC by AC. So ये तुम्हारा BC है और यही तुम्हारा AC भी है. ओके, सो हियर यू विल हैव वन मोर थिंग, यू कैन राइट कि BC विल बिकम इक्वल टू AC. ठीक है, तो BC की जगह AC लिख लेंगे तो AC बाई AC विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1. ओके, नेक्स्ट यू टेक cos 90. Cos 90 is what? Adjacent upon hypotenuse. Now what is your adjacent side to A? It is actually AB. So AB upon AC हो जाएगा. But when A is 90, AB will become almost equal to 0. So मतलब ये हो जाएगा 0 by AC which is equal to 0. So यानी cos 90 जो है that is equal to 0. ठीक है. Now tan 90 लेके देखते हैं. tan 90 that will be tan 90 अभी पिछले बार मैंने बताया that is equal to sin 90 by cos 90. sin 90 हमारे पास है 1, cos 90 है हमारे पास 0. जब भी anything is divided by 0 then that does not it is an infinite value, it is not defined. Okay, so this will have tan 90 will have value not defined. Followed? ठीक है. cot 90 क्या होगा? cot 90 I said it was equal to cos 90 by sin 90. ठीक है, cos 90 by sin 90. अब cos 90 मेरे पास क्या है? 0 है. So 0 by 1 which is equal to 0. So cos 90 also I get it as 0. कौन सा रह गया अभी? cosec 90. cosec 90 it is equal to what? 1 by sin 90, isn't it? cosec 90 is equal to 1 by sin 90. ठीक है, 1 by what is sin 90? I am having 1. So 1 by 1 which is equal to 1. Okay, then sec 90 it is equal to 1 by cos 90, that is equal to
1 by cos 90 मेरे पास क्या है, 0 है. Again 1 divided by 0, it is not defined. So it is not defined. ठीक है. In your book a table is given. अब देखो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, लेकिन एक्चुअली योर A जो कि यहाँ होना चाहिए था वो अभी इस तरह से हो गया. A it has shifted. Okay, तो इस तरह से you are not asking, they won't ask you any derivation and all. Only thing you have to remember these values. And in your book there is a table in page number 185. So that table you should be drawing in your notebook and you should be learning those values. That is giving you the values of 0, 30, 45, 60 and 90 for various ratios, sin, cos, tan, sec, cosec and cot. Followed everyone? Okay. So you can note this down, then we can go to the examples. Now let us take example number 6. Okay. Example 6 says that in triangle ABC, right angled at B, AB is 5 centimeter and ACB is 30 degrees. Angle ACB is 30 degree. Determine the length of the sides of BC and AC. Okay. So there is a triangle ABC which is having a right angle at B. Okay. ABC. Let us take it this way. Okay. And AB is given as 5 centimeter and angle ACB is given as 30 degree. So ACB is 30 degree and AB is given as 5 centimeter. You are asked to find what is BC and what is AC. What is AC and what is BC? कितना है वो चाहिए तुम्हें. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस जब हो ना तो तुम्हें डिसाइड करने का कि विच रेशियो यू शुड बी यूजिंग, बिकॉज विथ रेशियो ओनली वी आर सपोज टू फाइंड. अब 30 डिग्री इफ यू टेक cos 30, what is the ratio for cos 30? It is adjacent upon hypotenuse. So adjacent to 30 is BC, which we don't have. Hypotenuse is AC, which again we don't have. So then we should choose a ratio in such a manner that we have one side with us, which is AB, and that side is opposite to angle C. So if you take tan C, then we can get opposite upon adjacent. So there will be only one unknown quantity. So therefore we can use tan C, which is equal to tan 30 degrees, okay, which is equal to opposite upon adjacent. ठीक है. अब opposite to 30 is AB, okay, adjacent is BC. ठीक है. tan 30 का वैल्यू हमको मालूम है, that is 1 by root 3. That is why I said you should know the table. Everyone should learn the table where you have the values for different angles. Okay. The trigonometric ratios for different angles you are supposed to learn. So 1 by root 3 will be equal to AB, which is 5 upon BC. Okay. So you have BC is equal to 5 root 3. तो हमें एक साइड मिल गया, इट इज़ 5 रूट 3. दूसरा साइड हमारे पास है 5. कैन वी फाइंड AC? You can find either by Pythagoras theorem or you can simply use the trigonometric ratios. ठीक है. अगर अभी मैंने यहाँ पे tan C लिया, अगर मैं cot C ले लूँ, नहीं, we want hypotenuse, no? So we will take either sin C, which is equal to sin 30, which is equal to opposite upon hypotenuse. ठीक है. अब sin 30 क्या है? इट इज रूट 3 बाई 2. ये वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए. और ऑपोजिट में कौन सा है? ऑपोजिट इज 5. ओके. अपॉन
Sine 30 is what? Opposite upon hypotenuse, isn't it? Now opposite of sine 30 is AB. Okay, so I write here AB upon hypotenuse it is AC. Okay, sine 30 का वैल्यू मेरे पास है, it is 1/2, that is equal to AB हमारे पास है which is 5 और AC I don't know, so I can find AC which implies AC it is equal to 10. I hope you follow this. Okay, so this is how you will do this question. Okay, now coming to example number 7. So what is example number 7? Let me read out first. Example 7 says that in triangle PQR, there is a triangle PQR which has right angle with Q. Okay, PQR. This PR is given as 6 centimeter and PQ is given as 3 centimeter. Followed? Okay. You are asked to find angle QPR. QPR means ये angle find करना है और angle PRQ find करना है. These two angles you are supposed to find. So how can you find? Again, इधर angles तो कुछ दिया नहीं है, but hypotenuse is known to you and also you know the PR, PQ. So if you consider R, the angle R, if I write sine R, it will be equal to what? Opposite upon hypotenuse. डिसाइड करने का हमारे पास ये एंगल लेंगे, ये ऑपोजिट साइड हो जाएगा और हाइपोटेनस भी हमारे पास है, या फिर क्या ले सकते हैं, एंगल P ले सकते हैं, उसका एडजेसेंट साइड है PQ and hypotenuse is PR. तो either you take sin R or you take cos P, दोनों useful होगा तुम्हारे लिए. So sin R is opposite upon hypotenuse. So sin R opposite is PQ by hypotenuse is PR. So that is 3/6 which is equal to 1/2. Okay. So you get sin R is equal to 1/2. अब तुम देखो sin R अगर तुम्हें 1/2 मिल रहा है, then what should be the angle which has the value 1/2 for sin? It is theta. So therefore you can write angle theta, that is 30 degree. Okay, R should be 30. Then sin 30 will be 1/2, isn't it? So R should be 30 degrees. ठीक है, उसी तरह से अगर हम cos P ले ले तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. cos P ले लिया, it is equal to adjacent upon hypotenuse. cos P is adjacent upon hypotenuse. Now adjacent, what is it? 3, hypotenuse 6, so that will be equal to 1/2. अब इधर cos P you get it as 1/2. So which value, which angle of which angle of having trigonometric ratio cos will give the value as 1/2? It is 60. You can look into the table. So P will be equal to 60 degree. तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, या फिर sin R अगर तुम्हें 30 मिल जा रहा है, this R angle you get 30. So naturally P will be equal to 60 only, because these two together should come out to be 90. Okay. So this is how you should solve the example number 7. Okay. Note down. Now let us take example number 8. What does it says? Example number 8, it says that sin A minus B. This is example 8. Okay, and it says that sine of A minus B is equal to 1/2. That is given to you. Also cos A plus B, cos A plus B, that is given equal to 1/2. ठीक है. Also 0 is less than A plus B is less than 90, means ये जो angle A plus B है that is between 0 and 90, because we are having only values between 0 and 90 for the different trigonometric ratios. Also it is given that
A is greater than B. You are asked to find A and B. You are asked to find A and B. एंगल A कितना है वो पूछा है, एंगल B कितना है वो पूछा है. ठीक है, अब ये भी वैसे ही सॉल्व करना है. यू नो दैट साइन A माइनस B इट इज इक्वल टू 1/2. अब साइन का कौन सा एंगल विल गिव यू द वैल्यू 1/2? It is 30. So therefore we can write A minus B, it is equal to 30, isn't it? Why? Because sin 30 is having the value 1/2. मतलब यहाँ पे जो भी है वो 30 होगा. Sin this is A minus B will be equal to 30. Next जो दिया है that you take cos A plus B दिया है, ठीक है, इक्वल टू 1/2. नाउ cos विच एंगल गिव्स यू द वैल्यू 1/2? इट इज 60. सो यहाँ जो भी है दैट इज A प्लस B, इट शुड बी इक्वल टू 60 ओनली. ओके, रीजन यू कैन गिव कि cos 60 जो है दैट इज ओनली इक्वल टू 1/2, isn't it? Now you have A minus B equal to 30 and you have A plus B equal to 60. तो ये दोनों एलिमिनेट कर दो. सो यू गेट 2A is equal to 90, that is A is equal to 45. You get A equal to 45, that is what is asked. Okay, B भी पूछा है तो वो हम इधर से ले सकते हैं. A minus B is equal to 30 दिया हुआ है. सो A तो हमारे पास 45 है. 45 minus B is equal to 30, that is B is equal to 45 minus 30 which is equal to 15. So you have got angle B as 15. Angle A हमारे पास 45 है तो ये भी फॉलो कर रहा है कि A is greater than B. Followed? So these were various examples we have solved. Next time we can carry on with the exercise. Okay, so today I want every one of you to note down the values and also do all the examples and whatever we have done today in your notebook and learn the trigonometric values for various angles. Okay, so that is your homework today. Thank you.